सबसे पहले you have 4 different kinds of transformations that are in your syllabus. Okay, so transformation होती क्या है? Transformation is when you change a subject, you transform something, you change some object to another object, you convert an object to another object, right? That's transforming something. Now there are 4 types of transformations that are part of your syllabus. Now the first and the most simple is translation. Then you have reflection. Then you have rotation. And the fourth one is enlargement. Fourth one is enlargement. These are the 4 kinds of transformations that are part of your syllabus. ठीक है, so हम ये चारों discuss करेंगे. We will discuss different things about each one of them. वो किस तरह से define होती हैं, क्या-क्या चीजें आपको figure out करनी होती हैं. अगर आपके पास कोई transformation already visually नजर आ रही हो, आपने किस तरह से identify करना है which one of these transformations that is. We will talk about that. We will talk about matrix transformations. Matrices किस तरह से याद रखते हैं, वो किस तरह से आप उनको apply कर सकते हैं. We will talk about that as well. It's going to be a long session today, so you'll have to be a bit ready for that. It is going to touch around 1 hour 45 minutes to 2 hours. Okay, so it's going to be a long session today. Access those recordings there; they're available there for free on YouTube. Okay, so let's begin. So हमने ये चारों transformations discuss करनी है. ठीक है, we will discuss them with the help of this diagram first. Okay, so we have this graph shown here. So mostly क्या होगा, आपको एक grid दी होगी, and you will have some figure that you have in front of you, and you will be, modifying that and converting it to different shapes using those transformations. So let's begin with translation first. सबसे पहले हम बात करते हैं translation की. अच्छा, translation defined किस तरह से होती है? It's defined using a translation vector. So it's defined by a translation vector. So एक vector से define होती है, that's in this form. That's in this form, x, y. अब इससे x क्या बता रहा होता है? X tells you about the horizontal shift. It tells you about the horizontal shift. And y tells you about the vertical shift. Achha. Now, all a translation means is that you want to shift your object to another place. उसको आपने उठा के कहीं और पे place कर देना है. Nothing about the object changes in terms of the size of the object, in terms of the orientation of the object. Everything remains the same. Size भी वही रहेगा, उसकी orientation यानी उसकी direction भी वही रहेगी. Nothing will change. बस वो उठा के कहीं और पे place कर दिया, right? So for instance, if I were to say, we want to translate this object, by this vector, -4 and 3. इस object को, जो हमारे पास ये object A नजर आ रहा है, इसको हमें translate करना है -4, 3 पे. Now remember, this upper number represents horizontal shift, and this lower number represents vertical shift. ठीक है, अब ये प्लस होएगा ऊपर वाला नंबर, आप राइट पे जाओगे. ओके, माइनस होगा तो आप लेफ्ट पे जाओगे. नीचे वाला नंबर प्लस होएगा, यू विल गो अप. माइनस होगा, इसका मतलब है you're going down. Okay, now -4, 3. What does that mean? -4 means you're going 4 units to the left. इसका मतलब क्या है? 4 units left आप जाओगे. Or at the same time 3 units up. So 3 units up. All you have to do is you go to this figure. इस figure को आपने 4 units left move कर देना है और 3 units up move कर देना है. Okay, so let's do that here. Take every point on the figure. आप ये नीचे वाला point से start कर दो. For instance, this point here. Take it 4 units left. So 1, 2, 3, 4. This is 4 units left. And then 3 units up. 1, 2, 3. The point, if I were to represent that point by P,
that point will come to that point here, जिसको हम कह सकते हैं P dash. इसका image है, उसका जो resultant है, that is P dash, उसको हमने वहां पे represent कर दिया. Now, we can either move the rest of the objects, the rest of the points the same way, or we know कि अच्छा P वाला point यहाँ पे पहुंच गया है, तो वही figure आप वहां पे जाके बना दो उसी size की, तो the rest of the figures would look like this. तो ये point line बन गई, you've got this line here, this triangle that looks like this. अब individually हर point को भी move करोगे, you'll get to the same conclusion. If you were to look at this point, for instance, what do you do for this? You go 4 units left, 1, 2, 3, 4, then 3 units up, 1, 2, 3, you reach this point here. Yep, यहीं पे पहुंच जाते. So that's your translation. -4, 3 आपने किया, ये आपके पास translated figure आ गई. इसको हम image भी कहते हैं, image of the original figure. कोई भी आप translation करते हो, कोई भी transformation करते हो, no matter which transformation it is, जो उसका result होता है, इसको हम उस original object का image भी कहते हैं. Right? This is the image of the original object. So this is what your translation would be. Okay, now let's say if I were to draw another figure here, that is, let's say, like this. So we got another figure here in green, and this is a transformation of that original matrix A. आपको बताना है ये कौन सी transformation है. So आपको अभी हमने सिर्फ translation किया, so let me tell you this is translation. Translation का vector कौन सा होएगा? Translation, इस translation का vector क्या होएगा? That's what you have to tell. Now remember, translation हमेशा एक vector से define होती है. आपको बताना है ये कौन सा vector जो transformation को define करता है. So what is that vector? How do you figure that out? You take any corresponding points, any set of corresponding points. So let's say मैं ये point ले लेता हूँ, point P, वही पहले वाला. नीचे वाली figure में भी वही जो 90 degrees वाला point है. If I take that same point here, this is my point to my P dash. तो P से P dash पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? How many units do I have to move left, right, up, down to go from P to P dash? What do I do for that? I start from P. I go 1 unit left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 units मुझे left पे आना पड़ रहा है. So I know that this translation vector is going to have a -6 there. ठीक है? Horizontal वाले point के अंदर I'm moving for 6 units left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मुझे -6 वहाँ पे लिख दिया. अच्छा. What about vertically? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vertically भी मैं 6 units नीचे आ रहा हूँ, right? क्योंकि down है 6 units और 6 units left है. So my translation vector therefore is going to be -6 and -6. -6 because of -6 because of this horizontal shift, ये जो ऊपर वाला है, and then the second -6 because of the vertical shift. That's this one here. So that's my translation vector. This is how I would define this translation. Right, exactly. So that's -6 and -6. This is our translation vector. All right. Any confusion on this? This is the easiest of all transformations, translation. So translation में आपको इतना ही पता होना चाहिए. इसमें आपने बस ये देखना है. Size does not change. So the important points here are same size. Size does not change. The same orientation. Orientation का मतलब है उसका जो direction है figure की, उसी तरह से, right? जिस तरह यहाँ पे पड़ी हुई थी उसी तरह उठा के उसको shift कर दिया, right left. तो translation को हम shift भी कहते हैं, उसको उठा के shift कर दिया right left. Okay. All right, let's move on. So the next one that we want to discuss is reflection. Achha, now let me copy that same grid here. So let's talk about reflection next. Achha. Reflection. Now there are some common reflections that you have to be more familiar with because of बहुत ज़्यादा repeat होती हैं, like reflection in the x-axis, reflection in y-axis, reflection in the line y equals x. So let's write down some common reflections. हम matrices में भी देखेंगे बाद में. You've got reflection in y-axis, you've got reflection in x-axis, you've got reflection in the line y equals x and in the line y equals -x. तो इसमें आपको
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ी सी आनी चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स आपको पूरी आनी चाहिए, वैसे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत यूज होगी, स्पेशली फॉर दीज लाइंस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। आपको याद होनी चाहिए y इक्वल्स x लाइन कैसी होती है, y इक्वल्स माइनस x लाइन कैसी होती है। Okay, so before I tell you about that, let's talk about how you define a reflection. So reflection भी सिर्फ एक चीज से define होती है, and that is called the line of reflection. So this is only defined by a line of reflection. इसमें आपको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, that's called the line of reflection. Now let's take an example. Let's take one of those common transformations that I wrote on the right. Let's say y-axis में reflect करना, right? Let's say I want to reflect this figure in the y-axis. ये जो figure है मेरे पास triangle है, इसको मैंने reflect करना है y-axis के अंदर. How would I do that? Yes, Sharjeel, we also call that a mirror line. That's correct. So this is also known as the mirror line because जब आप एक मिरर के सामने खड़े होते हो, आपकी रिफ्लेक्शन बनती है पीछे. So it's the same concept that we would be using here as well. That's the line of reflection. वो जो मिरर होता है, that's sort of your line of reflection. That खुद खैर प्लेन होता है 3 dimension के अंदर. It's similar to that. अच्छा, yes, Shamil, that's correct. If we had moved right, it would have been positive there. So right या up move करें, ये positive होते हैं, right? Left या down move करें, ये negative होते हैं. Okay? All right. अच्छा. So we want to reflect this figure, this triangle A, in y-axis. इसको हमने y-axis में reflect करना. So let's draw that y-axis here. Y-axis already drawn है वैसे तो, let me just highlight that. So that's your y-axis. इसको हम reflect करेंगे. अब reflection का क्या मतलब है? Perpendicular difference on both sides of the line of reflection has to be equal. क्या मतलब? You take one point at a time again. आपने ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी फिगर नहीं देखनी, आपने एक पॉइंट पे पॉइंट डील करना है. So let's take this point for instance, जो ऊपर वाला पॉइंट है, right? Now इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितना बन रहा है? आप ये बॉक्स काउंट कर लें, एक बॉक्स राइट साइड पर है, राइट? उतना ही आपने लेफ्ट साइड पे बना देना है, सेम डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे. So this point, if I have to mark these points, so let's say this point is P, this is Q, this is R. So R के reflection is going to be here. This is R dash. Okay. Similarly, this point P here, P जितना right पे उतना left पे कर लेंगे. That's your point P dash. Q कितना right पे इस line से, y-axis वाली line से? It's 2 units right. उसको 2 units left पे ले जाएंगे, 1, 2. So that's your point Q dash. ये आपका point हो जाएगा Q dash. ठीक है. यहाँ पे आप इन तीनों points को use करके आप ये figure बना दोगे. This is your reflected figure. This is your reflected figure. ये हमारे पास y-axis के अंदर reflection होगी. Okay, this is reflection in the y-axis. Similarly, you can do it for reflection in the x-axis. वो figure आपके नीचे आ जाएगी. अब x-axis आप डिफरेंस देखोगे, वो same figure जो है वो नीचे आ जाएगी इस तरह से. It will look something like this. ठीक है. तो ये कुछ common transformations है y और y-axis और x-axis के अंदर. But then lines can also be slanted. जब तो horizontal or vertical lines होगी ना, it's going to be fairly straightforward. So let's say if I were to say you have to reflect this triangle A in this line. मैं यहाँ पे एक line बना देता हूँ. That looks like this, for instance. Here's the line tool there. So got this line here. तो सबसे पहले तो मुझे बताएं इस line की equation क्या होगी? I have this line here. What is the equation of this line? I want to reflect this triangle A in this line. It's a horizontal line. Horizontal line की equation किस form के अंदर होती है? It's y equal to something, right? Y equal to something. And what is the value here? The value is -1 here. This is -1. So this line is y equal to -1. Ismail, this is not the x-axis. X-axis से नीचे हैं हम. X-axis से एक unit नीचे हैं. So that's the line y equals -1. That's the horizontal line. So horizontal line की equation हमेशा इस form के अंदर होती है, y equal to something. अच्छा. Now we want to reflect this triangle A in this horizontal line, y equals -1. आपको simply क्या करना है? आपको boxes count कर लेने हैं.
ऊपर से कितना डिस्टेंस बन रहा है उतना ही डिस्टेंस आपने नीचे उसको एक्सटेंड कर देना। सो लेट्स से इस लाइन के ऊपर देखते हैं हम हर पॉइंट को इंडिविजुअली। पी का डिस्टेंस कितना है नीचे नीचे उस लाइन से 1 यूनिट 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स, ठीक है, वर्टिकली perpendicular to that line there the distance is 2 units, you go 2 units down, ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, this is your point P dash. Similarly let's look at R कितने यूनिट्स ऊपर है इस लाइन से 1 2 3 4, it's 4 units up from that line, अब उसको 4 units ले चले जाओ इस लाइन से 1 2 3 4 and that's going to be right here. Okay, what about Q? Sorry, this is R dash. R dash. What about Q now? Q कितना ऊपर है 2 units ऊपर है, उसको आप 2 units नीचे ले आओ उसमें रिफ्लेक्ट करके, you get that line and get that point here and this is your reflected figure. Okay, this is your reflected figure. This is reflection in the line y equals -1. This is reflection in the line y equals -1. ठीक है, अच्छा, so ये आपकी होगी horizontally or vertical lines के अंदर transformation के अंदर reflection. What if we have a slanted line? So let's talk about that. Tajil, we haven't done that yet. We will be doing that tomorrow, inshallah. Hopefully tomorrow we will be starting statistics definitely, inshallah. And I hope that we will have enough time to cover probability along with that as well. All right, let's talk about another one. अच्छा, अब ये जो common lines हैं जिनकी आपको equation का पता होना चाहिए, एक y equals x line है, एक y equals -x line, ठीक है, ये दोनों lines की equation आपको पता होनी चाहिए. So one line is y equals x. Y equals x कौन सी line होती है जहाँ पे y और x same coordinates आ रहे हो. So for example 3 3 4 4 5 5 2 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2. When the y and x values are the same, this is going to be your line y equals x. हम join कर दें. The gradient 1 है, y-intercept 0 है, yes. So अगर हम यहाँ पे draw कर दें इस line को, it looks something like this. ये हमारी line होगी y equals x. Okay. Y equals x line. अच्छा, अब इसमें रिफ्लेक्ट करना है हमें. Okay. Shami, I just made a random line in that case, and that was y equals -1. I could have drawn y equals 1 there as well. उसमें भी reflect कर सकते थे. That was also possible, but I just chose to show you how to reflect horizontally using this line. That was just an arbitrary choice. उसमें कोई rocket science नहीं थी. Okay, so let's say we have this y equals x line. Okay, ये हमारे पास एक slanted line है. इसकी जो y equals x लाइन होती है, ऐसे ग्राफ ऐसा होता है, इसके अंदर हमें रिफ्लेक्ट करना है. ओके, इसके अंदर हमें रिफ्लेक्ट करना है इस फिगर को. अब देखिए ये फिगर के अंदर से तो लाइन पास कर रही है. हाउ डू वी थिंक अबाउट दिस? नाउ again, as I told you earlier, it's going to be simpler if you think about one point at a time. पूरी फिगर को इकट्ठे नहीं सोचें, एक एक पॉइंट को करके सोचें. ओके, अब जब आप y equals x लाइन को देख रहे होगे या y equals -x लाइन को देख रहे होगे, अगर आप इन दोनों में से किसी लाइंस को देखते हो, आपको पता है क्या करना है? आपको ये इस तरह से डायगोनली बॉक्सेस काउंट करने हैं. सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट. आप एक एक पॉइंट देखो, वन पॉइंट एट अ टाइम. सो लेट्स से दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज q एंड दिस पॉइंट इज r. ओके, व्हाट अबाउट द पॉइंट p? p पॉइंट किधर जाएगा? अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. जो भी पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर लाया करता है, that does not change. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. It stays there. So ये point P जो है, that's not going to change. It's going to stay at the same position. ठीक है, तो P dash भी यही point होएगा. It's not going to move around anywhere else. It will be the same point in the reflected figure as well. So P dash भी आपका ये same point ही होगा. Line of reflection के ऊपर कुछ भी आ जाए, वो shift नहीं होता, because distance 0 है, तो बाद में भी distance 0 रहेगा, तो वो उसी पॉइंट के ऊपर ही आपके पास आ जाता. अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट द पॉइंट R? लेट्स से R कहाँ जाएगा? अब देखिए R का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
इट्स नॉट एनी डिस्टेंस। आर का डिस्टेंस आप लाइन से आप कह सकते थे कि अच्छा ये भी आर का डिस्टेंस है, ये भी आर का डिस्टेंस है, ये भी आर का डिस्टेंस है। नो, whenever we talk about the distance of a point from a line, we always talk about perpendicular distance. ये आर का डिस्टेंस लाइन से क्या होगा, perpendicular distance कितना बनेगा, that's going to be like this. ये आपका perpendicular distance है of r from the line, और ये हमेशा इस तरह डायगोनल पे आ रहा होगा। अगर आप y equals x लाइन की देख रहे हो, ये इस तरह डायगोनल बनेगा, इस बॉक्स का डायगोनल इस तरह से। कितने डायगोनली, कितना बॉक्स, कितना ये बन रहा है, डायगोनली 1 यूनिट बन रहा है। अब 1 यूनिट डायगोनली उसकी ऑपोजिट साइड पे चले जाओ, यू गेट दिस पॉइंट हियर। आपको कहां पे पॉइंट मिल जाएगा, r को रिफ्लेक्ट करके वो पॉइंट इधर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर r डैश। डज दैट मेक सेंस? r का डिस्टेंस लाइन से कितना था, 1 यूनिट डायगोनली ऊपर की साइड पे, तो आप उसी को एक्सटेंड करके नीचे वाली साइड पे आ जाओ 1 यूनिट, get this point r dash. Okay, what about q now? Same logic. q का डिस्टेंस इस लाइन से कितना बन रहा है, diagonally perpendicular distance, it's half here, half a box. half जितना नीचे है उतना ही half आप ऊपर चले जाओ, yes Ismail, that's correct, उतना ही half आप ऊपर चले जाओ, you get that point there, and that's q dash. This point is going to be q dash. ठीक है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाफ अ बॉक्स डायगोनली था नीचे, हाफ अ बॉक्स ऊपर चले गए, यू गेट दैट q dash there. आपकी फिगर क्या बनेगी, इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. This is your reflected figure, and again you can check the size of the figure is still the same. जो पहले साइज था, जो पहले फिगर का एरिया था, अभी भी वही है, साइज इज नॉट चेंज्ड, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होगी है y equals x लाइन के अंदर. Right, this was a bit tricky because line of reflection आपके ऑब्जेक्ट के अंदर से पास कर रही थी. If you look at past papers, you see a couple of questions like this in past papers, जहाँ पे आपकी line of reflection फिगर के अंदर से पास कर रही होती है, and that's a bit difficult to figure out. लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट करो, एक पॉइंट एक टाइम के ऊपर, then it's fairly straightforward. Don't think about the whole figure at the same time. Think about one point at a time. उसको reflect करो. Okay. Let's talk about the other line, y equals minus x. वो भी हो सकता है. Okay. So what if we had the other line here, y equals minus x? उसकी भी आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसा होता है. -1 ग्रेडियंट के साथ आपका ग्राफ जो है उसका होगा something like this. Y equals -1, x gradient is -1, and this is the line that's y equals minus x. Okay. अब हमें इस लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट करना है. Let's say again we've got a few points there, p, q, and r. We want to reflect these points in this line y equals minus x. How do we do this? Again, अब आपने again perpendicular distance देखना है of one point at a time. ठीक है. अब perpendicular distance जब इन दोनों लाइंस में आप देख रहे होगे, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप डायगोनली बॉक्सेस काउंट कर लो. ओके. अच्छा, तो p का डिस्टेंस कितना डायगोनली, 1 यूनिट डायगोनली लाइक दिस. आप उतना ही उसको नीचे ले जाओ दूसरी साइड के ऊपर, 1 यूनिट नीचे. That point is going to be right here. That's p dash. Okay. अच्छा, similarly q कितना है लाइन से डायगोनली, 1 बॉक्स and then 1.5 बॉक्स डायगोनली. 1.5 बॉक्स आप नीचे वाली साइड पे चले जाओ, so 0.5 box and one more, that's going to be right here. This is your point q dash. Similarly r diagonally कितना है, 1 2 boxes diagonally, 2 boxes आप और नीचे चले जाओ, so you get 1 2 and you get this point here, that's r dash. Make this figure and it looks like this. Okay. तो जब आपके पास ये दोनों लाइंस होंगी, इसमें आपने क्या करना है, you have to count boxes diagonally. इन दोनों में आपको diagonally count करने होंगे, और पहली दोनों में you can just count them horizontally or vertically depending on which equation, depending on whether it's horizontal or vertical. All right. Okay.
Sharjeel will get to that, तो matrices हम end पे करेंगे अभी, so you'll have to wait for that, ठीक है? ये हमारी reflections होगी y equals minus x के अंदर, ठीक है? Varisha will come to that as well. We'll come to that as well. When we have the figures given, हम किस तरह से वो transformations identify करते हैं, वो कैसे करना है, we will talk about that as well. In fact, just in a moment, just give me a few minutes. I'll come to that. अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने वो याद की होती हैं इन सारे चीजों इन सारी reflections के जो आपके coordinate किस तरह से change होते हैं. If you're one of those, if you're that kind, if you can remember stuff, if you can memorize stuff like that, then of course you can do that as well. Although I don't recommend that because में बहुत ज़्यादा chances होते हैं भूलने के. लेकिन if you're that kind कि आपको याद रखना आसान लगता है, you can do that. So आपके पास ये 4 common types of reflections है. Y-axis, X-axis, you've got y equals x. And you've got y equals minus x, ठीक है? तो अगर आपके इसके कोई coordinates हैं, let's say the original coordinates are AB, okay? AB आपके coordinates हैं original, तो इन reflections के बाद वो क्या बन जाते हैं? अगर आप y axis में reflect कर रहे हो, तो क्या होता है? आपका जो आपका जो x coordinate है, x coordinate, that does change the sign. X coordinate का sign change हो जाता है, right? So जो for example, अगर आपके पास होता 5, 8 एक point, आप इसको y axis पे reflect करते हैं, what will it become? It will become minus 5 and 8. Okay? So that's what happens when you reflect in y axis. What happens when you reflect in x axis? आपका जो y coordinate है वो change हो जाता है, वो negative हो जाता है. Okay? Y coordinate negative हो जाता है. For instance, अगर आपका एक point था, अगर आप x axis में reflect कर रहे हो, आपका y coordinate negative का sign change हो जाता है. So let's say if you had this point here, जो मैंने green में यहाँ पे mark किया, इसके coordinates क्या हैं? इसके coordinates are 6 and -2. जिसको आपने reflect करना है x axis के अंदर, तो क्या होएगा? x coordinate वही रहेगा, right? If you had a here, you have a there as well. X coordinate remains the same. So it's still 6. लेकिन y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है. So -2 है तो वो +2 हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा. This is 6 and 2. That's your reflection there. Okay? अच्छा, इसी तरह y equals x लाइन में अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसमें क्या होता है? Basically your coordinates they interchange. AB जो है वो B और A बन जाता है y equals x लाइन में रिफ्लेक्शन करते हुए, right? So for instance, if you had this point here, that's 2 and 8. इसको आपने रिफ्लेक्ट करना है y equals x लाइन में, ठीक है? एक तरीका तो वो है, आपके पास फिगर है, आप ड्रॉ कर लो इस तरह से लाइन, and you know that's more logical. It's you know you can it's hard to forget, right? So आपको पता है कि diagonally box sum करने 1 2 3 boxes दूसरे साइड पे आ जाएंगे, तो you get this point here. On the other side, that's right here, which is 8 2. लेकिन हो क्या रहा है? आपके 2 8 coordinates थे, उनको interchange कर दिया, वो क्या बन गए? 8 2. So that's what happens when you reflect in the line y equals x. Okay? अच्छा. Similarly, the last one, y equals minus x में reflect करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे आपके coordinates interchange भी होते हैं और उनके signs भी change हो जाते हैं. Okay? So your coordinates interchange and their signs also reverse. Signs भी reverse हो जाते हैं. Coordinates, ठीक है? So for instance, if you had this point here, मेरे पास ये point है, which is -5 and 1. तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके reverse भी कर दें. So reverse कर दें तो ये 1 आ जाएगा, बाद में 5 आएगा, और इसके signs भी change कर दें. तो पहले 5 था वो +5 हो जाएगा, -5 था वो +5 हो जाएगा, 1 था वो -1 हो जाएगा, राइट? सो उसकी रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ चला जाएगा? -1 5 के ऊपर. दैट्स दिस पॉइंट हियर. हम कंफर्म भी कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड मेथड से, डायगोनली बॉक्सेस काउंट किए. वी हैव 1 box here, 2 boxes here, and then 2 boxes on the other side, 1 and 2. We get to the other point. So that point has coordinates -1 and 5. Right, so this is one way to remember these as well, if you are comfortable memorizing stuff.
ये सिर्फ इन्हीं कॉमन के लिए, बाकी सब के लिए फिर यही आपको तरीके लगाने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्राफ से देखना होगा, उसमें भी आपको एक तरीका होता है मेमोराइज करके करने का, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट, इट्स लॉन्गर एंड इट्स हार्ड टू रिमेंबर एज वेल। आप ग्राफिकली करेंगे, इट्स मोर लॉजिकल, you will not forget it as well, so that's better. Okay, any questions until now? Any problems until now? So this is for those people who prefer doing it this way. याद रखने की आदत है, वो ये कर सकते हैं, रटा लगा सकते हैं इसको. So that's an option as well. Any problems with this? Any questions, anyone? No? Y-axis और X-axis वाले repeat कर दें. Ismail, you'll have the recording available. जैसे ये class खत्म होएगी, you'll have the recording available. You can just go through that quickly. Since we have a lot to cover today, I'll try to just go on, and that will help us cover all the things today that we want to do. कि बहुत ज़्यादा चीजें cover करनी है. We don't have a lot of time. 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे. So I just want to be a bit quick. All right. Now let's say you've got a figure here given. Let's say I've got this here, and so what am I doing? This is okay. I'm just drawing another triangle here. And okay, all right, so I've got this triangle here. Okay, and I'm calling this triangle B. This is triangle B. All right, now you are basically asked, describe the transformation. Describe the transformation that maps A onto B. Right? This is as difficult as it can get because my equation which I बनाई है, that's one that is not very common. लेकिन उसमें आप coordinate geometry use करके निकाल सकते हैं. So let's say you've got this. You've got a triangle A and you've got a triangle B. A is mapped onto B using some transformation, and you have to figure out what transformation that is. अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें आपको अक्सर confusion होगी. ये हम बाद में भी एक बनाएंगे चार्ट जिसमें आपको बताऊंगा किस तरह से हमें फिगर आउट करना है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. यहाँ पे तो हमें पता है रिफ्लेक्शन है, मैंने आपको बता दिया पहले, हम कर ही रिफ्लेक्शन रहे हैं तो रिफ्लेक्शन ही होगी. लेकिन आपके पास एक कंफ्यूजन आया करेगी काफी दफा आइडेंटिफाई करने की कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है. राइट, इनमें अक्सर कंफ्यूजन आती है रिफ्लेक्शन और रोटेशन के अंदर. अभी रोटेशन हम करेंगे in a few minutes, लेकिन इन दोनों में अक्सर confusion आती है. Right? I'll tell you a test right away that you can use to figure out to differentiate between the two of them. आपने figure out करना है कि ये reflection है या rotation है. How do you differentiate between the two? Now, what you're going to do for that is you're going to mark the corresponding points on both figures. 90 degrees वाला पॉइंट यहाँ पे एक के ऊपर P है, दूसरे के ऊपर भी हम P उसको मार्क कर देते हैं. Let's call that P dash. Okay. अच्छा, 90 के साथ जो छोटी वाली लाइन है उस पे हमारे पास let's mark this Q. उसी तरह से 90 डिग्री के साथ जो छोटी वाली लाइन है दूसरी एंड पे जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे Q होगा. So this is important to understand कि हम corresponding points किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. आपने कोई एंगल देखना है जो इजी टू आइडेंटिफाई है इन बोथ फिगर्स. यहाँ पे 90 दोनों को हमने P कर दिया और उसके साथ जो छोटी वाली लाइन है उसको हमने Q मार्क कर दिया, ऊपर भी Q मार्क कर दिया. लंबी वाली लाइन है
उसके साथ हमने ऊपर r लिख दिया, तो दूसरी फिगर के अंदर भी हमने लॉन्गर लाइन के साथ यहाँ पे r डैश लिख दिया. Okay, now how do we identify whether whether it's a reflection or a rotation? So one idea is what Laiba just suggested there. You can draw lines connecting these points. Okay, so you can do that. That's one possibility. Yes. उसके लिए आपको कुछ draw करना पड़ेगा. Yes, but you can do that. R को join कर दें, Q को join कर दें, और P को join कर दें. इन तीनों को join कर दिया. If these lines come out to be parallel, that means it's a reflection. अगर ये parallel नहीं है, ये intersect कर रही हैं, that would mean it's a rotation. ठीक है, that's one idea. आप lines draw करके देख लें. Another idea, just by looking at the figure without any drawing, is आप दोनों figures को लिखें एक order के अंदर. Either anti-clockwise लिखना चाहते हैं, anti-clockwise लिख लें. So let's say anti-clockwise लिखते हैं. Anti-clockwise लिखते हैं. Let's say P से start करें यहाँ पे दोनों फिगर में. Anti-clockwise जाते हैं नीचे वाली फिगर में. हमारे पास आता है PQR. Anti-clockwise. P से start कर रहे हैं हम. PQR in the original figure. Let's do that. Let's do the same thing on the other figure. P से start किया, anti-clockwise गए. What do we get? We get PRQ. जब भी रिफ्लेक्शन होती है, ये आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है. ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है जब रिफ्लेक्शन होती है. अगर रोटेशन हो, ये आपका ऑर्डर चेंज नहीं होता. ऑर्डर रिमेन्स द सेम. आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर इसमें क्लॉकवाइज लिखें, I have to write it clockwise. So clockwise लिखता हूँ. P से start करता हूँ. Clockwise लिखा है. PRQ. Okay. So PRQ. उस पे मैं लिखूँ clockwise. What do I get? I get PQR. Since the order is not the same, अगर order same नहीं होगा, तो ये reflection होगी. Okay. So that's another test that you can also use. Okay. Is this clear to everyone? तो ये हमें पता चल गया लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है. ये रिफ्लेक्शन है. ठीक है, रिफ्लेक्शन है, ये पता चल गया. सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को एक चीज डिफाइन करती है, एंड दैट इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. हाउ डू यू फाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नाउ? हाउ डू यू फाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने का क्या तरीका है? You join, or not, you don't have to join actually. Find the midpoints. Find the midpoints of corresponding points. इसमें उसकी जरूरत नहीं है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर. आप कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हो. That's also fine. But it's easier to just use the midpoints. Find the midpoints of corresponding points, and then you just join the midpoints. Just join these midpoints. Corresponding points के midpoint find कर लें. P और P dash का midpoint आप देख लें क्या आता है. So P और P dash का midpoint is going to be this point here. This is the midpoint of P and P dash. या आप रूलर से भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं. रूलर से कर लेंगे, जल्दी होएगा. गॉट वन पॉइंट हियर. पी और पी डैश का मिड पॉइंट, आर डैश का मिड पॉइंट, दैट्स राइट हियर. क्यू डैश का मिड पॉइंट, दैट इज राइट हियर. तीनों हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे. अगर सेम लाइन में नहीं आ रहे, इसका मतलब रिफ्लेक्शन नहीं है. तीनों आपने ड्रॉ करने मिड पॉइंट्स, उनको ज्वाइन कर देना है. That's your line of reflection. Does that make sense? So the line of reflection there is going to be like this. This is your line of reflection.
Brish, we are doing transformations. Yes, this is much easier than that. Exactly. This is much easier and quicker than perpendicular bisector. Find the midpoints and join those midpoints. Okay. And that's your perpendicular bisector. फिर आप उसके बाद देख लें इक्वेशन क्या है. जनरली इस तरह की नहीं आती. जनरली इन्हीं में से कोई या तो ये होती है, अगर डायगोनल हो तो y इक्वल्स x या y इक्वल्स माइनस x होती है. इन दोनों में से कोई होती है. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो तो वो कोई भी हो सकती है. उसमें y एक्सिस x एक्सिस के अलावा बाकी भी हो सकती है. लेकिन डायगोनली अगर हो, कोई स्लैंटिंग हो, तो वो इन्हीं दोनों में से कोई आती है जनरली. ठीक है. But you know coordinate geometry. आपको अगर figure out करना होता है इस line की equation क्या है, you know the y-intercept, that's 6. You can find the gradient. Gradient is 1. इस line की equation basically है y equals x plus 6. Right? Generally ऐसी नहीं आती. अब बस slanting सिर्फ यही दो आती है mostly. लेकिन आपको coordinate geometry आती है, आप वो figure out कर सकते हो even if you had to. Okay? So that's your line of reflection. Midpoints कैसे पता चलेगा? You have the coordinates. Coordinates को use करके find कर सकते हैं, but that's much longer. You will just use a ruler. Ruler रखें P और P dash के ऊपर, right? So ruler यहाँ पे रखेंगे. So where is that line? Rulers आप रखें, इस तरह से place करें P P dash के ऊपर. Ruler पे देख लें total length क्या बन रही है, उसके midpoint पे कौन सा point आ रहा है, right? So that's pretty basic. P और P dash को join करते हुए ruler रखें, right? Your ruler will look something like this. ये आपने ruler place किया. P और P dash में जो distance आ रहा है, उसका midpoint mark कर लें. Does that make sense? इसी तरह से for all the other points as well, right? R dash के लिए और Q dash के लिए midpoints mark कर लिए, उनको join कर देंगे. That will be your line of reflection. Okay, any questions on this? Because that's all that you need to know about reflection. Okay, हम वो identify कैसे करने हैं सारी transformations वो हम देखेंगे. ठीक है. मुश्किल type कौन सी? Abdullah, what do you mean by that? Equation find करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कि okay, Abdullah, I'm really sorry, I don't understand your question correctly. Difficult question आ सकता है, तो इस तरह आपके concepts clear हैं, तो you should be able to do that. Difficult question तो किसी भी topic पे आ सकते हैं इसमें, मतलब I don't exactly get the question there. Okay, so yeah, so we're done with translation and reflection. Next is rotation. Rotation. अच्छा, rotation को क्या चीजें define करती हैं? There are two main things that define rotation. आप भी जब भी आपने define करनी हो rotation, अगर आपको नहीं लिखोगे दोनों चीजें, you will not get full marks. Okay? So one is the center of rotation. Yes. So you need to have the center of rotation. Okay? And the other is the angle of rotation, right? The angle, उसको फिर आपने लिखना होता है whether it's clockwise or anti-clockwise. ठीक है, उसमें आपने बताना होता है फिर ये clockwise है या anti-clockwise. ये दो चीजें mention करना जरूरी है. This is what defines rotation. It's defined by the center of rotation and the angle, whether it's clockwise or anti-clockwise. Now, what do we mean by that? For instance, I have this figure again. I've got this triangle. That's the triangle A. And what I want to do is I want to rotate this triangle about origin. ये मेरा origin है, right at the center. This is the origin. ठीक है, इसको मैं rotate करना चाहता हूँ. Let me write that here. Rotate A 90 degrees anti-clockwise about
the origin. About origin का मतलब है center of rotation आपका क्या होएगा, origin होएगा, right? So about origin का मतलब क्या है, the center of rotation is the origin, that's 0 0. Origin center of rotation है और आपने इसको 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अच्छा, यहाँ पे ना रोटेशन करने का एक आसान तरीका, आप ये इसको देखें, अगर आपके पास कोई इस तरह की एक ग्रिड है या एक आपके पास ये प्लस साइन है, दैट्स इट, ओके। अच्छा, अब आप देखें, अगर आपके पास कोई चीज इस तरह से राइट साइड पे हो, सो लेट मी मार्क दीज पॉइंट्स, यू गॉट अप, यू गॉट राइट, यू गॉट डाउन एंड यू गॉट लेफ्ट, ओके। अब देखिए, आपने 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। अब मुझे बताएं, ये जो अप है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके कहां चला जाएगा? 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दिस पॉइंट, जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस पे मैंने रोटेट करना है। अब कहां चला जाएगा 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके? इट विल गो टू एल, राइट? सो अप विल गो टू एल, अप विल गो टू लेफ्ट, राइट? अच्छा, व्हाट अबाउट द लेफ्ट? लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके कहां चला जाएगा? डी पे चला जाएगा, ओके। अच्छा, डी कहां चला जाएगा? आर पे चला जाएगा। आर कहां चला जाएगा? यू पे चला जाएगा, ओके। नाउ we can use this concept here on our figure. हमें origin के about इसको rotate करना है, इस पूरी figure को। Let's mark these points as usual. So let's say this is our point P. Okay, this is our point Q. This is our point R. अच्छा, अब देखिए, rather than thinking about this like this, कि आप origin से इस तरह जा रहे हो, फिर आपने इसको rotate करना है 90 degrees. It's easier to think horizontally and vertically. Horizontally, vertically think, उसको रोटेट करना हमारे लिए आसान है, बजाय इसके हम देखें, अच्छा ये ओरिजिन से आर पे देखें, हम उसको प्रोटेक्टर से देखें 90 डिग्रीज यहाँ पे रोटेट करेंगे, ये किस तरह आएगा इधर। सो दैट माइट बी बिट मोर चैलेंजिंग। व्हाट यू कैन डू इज, अब देखिए ओरिजिन से जो भी आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, जो भी आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, वहां से देखें आप इस पॉइंट पे कैसे पहुंच सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, it's not necessary, you can do it either way, horizontal first or vertical first, the order does not matter, you can do either of them first, it would not matter. Achha, so let's start with the center of rotation. Let's say we go 1 unit right and then we go 1 unit up. तो हम P पे कैसे पहुंच रहे हैं? 1 unit right and 1 unit left. तो मेरे पास ये इस तरह की फिगर बन गई है, ये इसको मैं रोटेट करता हूँ लेफ्ट पे, इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, ये फिगर क्या बन जाएगी? ये फिगर बन जाएगी आपकी समथिंग लाइक दिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये वर्टिकल बन जाएगी, जो राइट था वो अप चला गया और जो अप था वो लेफ्ट चला जाएगा। Does this make sense? थोड़ा सा छोटा है, let me do it this way. So I would increase the width there. Yeah. So this is right, 1 unit right and then 1 unit up. This is what is happening. ये मेरे पास एक फिगर है, ठीक है, इसको मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, से क्या बन जाएगी? ये जो ये वाला पार्ट है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बन जाएगा। तो वर्टिकल पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अच्छा, पहले फिगर थी that look like this, ये रेड वाली फिगर बन जाएगी which looks like this. तो वो जो पॉइंट P था, that's this point now, that's P dash. Does this make sense? इसी तरह से let's talk about R now. P dash हमने मार्क कर दिया, I'm going to erase this now. So this is my point P dash. ये मेरा point P dash हो गया. What about R? R के लिए क्या करना पड़ रहा है? आप फिर से देख लें उसी तरह से. I'm going 1 unit right, 1 right, and then 3 units up like this. ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये चीज, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, ये इस तरह बन जाएगी, है ना? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद व्हाट डू आई गेट? 1 right, 3 up था, I go 1 up and 3 left like this, and that's my point R dash. ठीक है,
I can mark R dash using this now. This is my point R dash. Let's take Q now. Q के लिए क्या करना पड़ रहा है? 2 right and then 1 up. इसको आप रोटेट कर दो, ये फिगर है, इसको रोटेट करेंगे क्या बन जाएगा? ये इस तरह की फिगर बन जाएगी, राइट? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके. लेट्स डू दैट. 2 right 1 up था, तो ये हो गया 2 up and 1 left. This is the point that you get. That's the point Q dash. You can join those points now, and you get a figure like this. That's P, Q, R. That's your rotated triangle. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? तो हमने क्या करना है? हमने वहां तक पहुंचने के लिए इस तरह की फिगर बना देनी है और उसको उसी तरह से रोटेट करना है. All right. Very good. Now let's do the other way around. Let's say हमने करना होता, or let's take another point actually. So origin जरूरी नहीं है, हम कोई और point लेते हैं. So let me change this. Okay, let me come to that one ahead. So how did I rotate R? So R was right here, right? This was R. So I was going 1 unit right, like this. So I went 1 unit right, इस तरह से, and then 3 units up. भी देखें, इस ये फिगर है, इसको मैं 90 degrees anti-clockwise rotate करूंगा, तो क्या बनेगा? It will become like this, right? So I draw that here. 1 right था, 1 up हो गया. 3 up था, वो 3 left हो गया. I get this point here. That's my R dash. Okay. All right. Let's do another thing. Let's change the center of rotation. Let's change the center of rotation. Center of rotation कहीं और ले जाते हैं. It's not necessarily going to be the origin. Let's say I want to rotate 90 degrees, but now I want to rotate 90 degrees clockwise about, or let me write like this, with center of rotation. Center of rotation, where do I take that? Let's say -2 and 1. -2. In fact, let's make it a bit more difficult. -2 and 3. Okay. This is our center of rotation. -2 and 3. इस फिगर को हमने रोटेट करना है 90 degrees clockwise, and the center of rotation is -2, 3. How do we do this? We mark that point first, the center of rotation, -2, 3. That's going to be right here. ये मेरा point है, -2 and 3. इससे मुझे रोटेट करना है 90 degrees clockwise. ठीक है? उसी तरह से मैंने horizontal vertical lines बनानी. Okay, let me mark those points here. This is P, this is Q, this is R. How do I reach P, let's say, from the center? P पे कैसे पहुंच सकता हूँ center से? ये मेरा center है, remember, it's called the C. So this is the center. Now I'm going to start from C, and I want to reach the point P there. I can go, let's say, 2 units down, and then 3 units right. 2 down, 3 right. अब मुझे क्या करना है? इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है. इस फिगर को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो क्या बन जाएगा? इस फिगर को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, अब देखिए मेरे पास ये फिगर है, राइट? इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, क्या होएगा? It's going to look like this: 2 left and then 3 down. I can write like this as well. I can say this is 2 down and 3 right. Clockwise rotate करते हैं, आप इस साइड पे बेशक उस तरह से बना लें. You know that this is up, this is down, this is right, this is down, this is left. Down कहाँ चला जाएगा? Down left पे चला जाएगा, right? So it's 2 left here, and then right कहाँ चला जाएगा? Right down पे चला जाएगा. You got 3 down there.
and that's your point P dash. That's your point P dash. ये आपका P dash हो गया. Okay. So let's do it using this method now, so that you also know about this. This is right, this is down, this is left, this is up. मैंने एक point mark कर दिया वहाँ पे. वो कहाँ आ रहा था? It was right here. So this was R dash. ये मेरा R dash आ गया. Let's think about, sorry, P dash. So this was my P dash. Let's think about Q now. Q तक कैसे पहुँचेंगे? 2 down, 1, 2, 3, 4, 4 right. I can write there like this. It's 2 down and 4 right. इसको मैं rotate करूँगा 90 degrees clockwise. Down कहाँ जाएगा? Down left पे चला जाएगा. So 2 down कहाँ चला गया? 2 left. 4 right कहाँ चला गया? Down. Right down पे चला जाएगा. That's 4 down. Okay. So C से मैंने start किया. I go 2 left. And then I go 4 down. I reach this point here. And that's my Q dash. This point here is my Q dash. मेरा दूसरा point आ गया. ठीक है? Then I have R. R कैसे कर सकते हैं? Erase that. मेरा आ गया था Q dash. What about R now? So R is just 3 right. R is just 3 right. Right कहाँ चला जाएगा? Right down पे चला जाता है. I have 3 down. That point is going to be right here. That's my R dash. This is what we get. This is the triangle. That's the triangle A. Triangle A dash कह लें या उसको B कह लें. This is my rotated triangle with this center of rotation and this angle of rotation, 90 degrees clockwise. Okay, Usman, you can do this using a protector, but that's going to take a lot more time. It's going to take a lot more time. So अगर आपके पास ये वाले rotations है ना 90 degrees or 180 degrees, in rotations के लिए you should not have to use a protector. You should know a way to do this without a protector. कभी-कभी आपके पास दूसरी rotations आ जाती हैं in which the angle is not 90 or 180. उसमें फिर आपको protector use करना पड़ता है. There's no other option there. But here you can just do it like this. Okay. अगर C mention ही नहीं होता फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे ना. फिर तो आपको पता नहीं है कैसे rotate करना है. तो rotate center of rotation के बगैर तो आप rotate नहीं कर सकते ना. Center rotation होगा तो फिर ही कर सकते. Okay. उस्मान इसकी रिकॉर्डिंग यहीं पे तो अवेलेबल होगी. आपके इधर नून पे अवेलेबल होगी. I'll also try कि I upload this on YouTube. I'll also do that, but that'll take more time. यहाँ पे ये फौरन बाद जो है वो अवेलेबल हो जाएगी. As the class ends, उसके फौरन बाद the recording will be available there. Uh, 270 degrees Manahil, we will change that to a 90 degrees rotation. Okay, Shajil will come to that. So अभी हम forward कर रहे हैं कि हमें पता है कि क्या rotation करनी है, वो किस तरह से करनी है. So that's what we are trying to understand right now. If we have to do the backward process, कि figures दी हुई हैं, हमें figure out करना है कि ये कौन सी transformation है. We will talk about that in a moment. वो हम देखते हैं कि वो कैसे करना है. अभी हम forward कर रहे हैं कि हमें angle भी पता है, हमें center rotation पता है, तो rotation करनी कैसे, apply कैसे करनी है. तो अभी हम वो देख रहे हैं. So that's how you do that. Now let me go back there and change this. Another rotation that you often encounter is 180 degrees rotation. Okay, 180 degrees rotation में क्या होएगा? That's really straightforward. Rotate a 180 degrees. Let's say about origin भी कर सकते हैं. Let's do about the origin first. 90 degrees rotation काफी आसान होती है. 180 degrees rotation काफी आसान होती है. आप सिर्फ ruler रख लें. आप वही वाला method भी apply कर सकते हैं. अभी हमने apply किया. But it's much easier than that. आपने बस ruler रखना है. आपने इस पॉइंट से डिस्टेंस देखना है ये कितना है इस साइड के ऊपर. So this is P, this is Q, this is R. ये कितना डिस्टेंस है? उतना ही डिस्टेंस आपने उसी पॉइंट से आपने एक रूलर रखना है ना. रूलर आपने रखा होगा. आप रूलर से एक साइड पे डिस्टेंस देखोगे, उसी लाइन के उसी डायरेक्शन के अंदर उतना डिस्टेंस दूसरी साइड में मार्क कर दोगे. So that P was there on the other side.
यहाँ पे नीचे आ जाएगा, that's b dash, ठीक है। इस तरह आप देखोगे q से डिस्टेंस, that's like this, उसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, उतने ही डिस्टेंस पे दूसरी साइड पे मार्क कर देंगे, that point is going to be right here, q आपको यहाँ पर आ जाएगा, this is your q dash। Similarly r से देखें सेंटर रोटेशन का डिफरेंस, जितना डिस्टेंस ऊपर को है उतना ही नीचे को एक्सटेंड कर दें, at that point here ये आपका पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट r dash, ठीक है। 180 डिग्री सबसे आसान होती है, इसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस जो है वो सेंटर रोटेशन से दोनों साइड्स पे इक्वल रख लेना है, बिकॉज़ वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चला जाता है। आपकी जो फिगर होती है, that's your 180 degrees rotation about the origin. Now it does not necessarily have to be about the origin, it could also be some other point. Let's say it was about let's say 1 and 4. What happens then? ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे आपने वही चीज करनी है, आपने देखना है पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या आ रहा है आपसे, राइट। सो ये नीचे वाला पॉइंट, लेट्स कॉल दिस p, दिस इज q, दिस इज r का डिस्टेंस कितना बन रहा था 1 यूनिट, उतना ही ऊपर कर देंगे, दैट्स योर r dash। p का डिस्टेंस कितना बन रहा है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स ऊपर चले जाएं सेंटर से, दैट्स p dash। q कितना बन रहा है, q इज लाइक दिस, ठीक है। इसी को आप एक्सटेंड कर दें ऊपर वाली साइड पे उतने डिस्टेंस के ऊपर रूलर से ही, एंड दैट्स योर पॉइंट q dash। आपकी ट्रायंगल बन जाएगी, दैट लुक्स लाइक दिस, दैट्स योर 180 degrees रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट c। Usman, that's not correct. So that's a point that is often the most confusing. 180 degrees rotation और y equals minus x के अंदर reflection, ये often अक्सर confuse करते हैं कि कब आपकी ये rotation होगी, कब आपकी ये reflection होगी। Let me come back to that in next. In fact, so अभी आप देख लें, ये इसमें कोई problem तो नहीं है, मैंने 180 degrees rotation कर दी यहाँ पे, that's, you just have to take your point to the other side there. So let me draw that earlier figure again, जो मैंने पहले draw की थी इससे, तो हम origin के about कर रहे थे। So let me draw that here again. About origin जो हमने किया था उधर क्या था? Our figure looked something like this, this, and this. This was our figure. Oh, sorry about that. So वो ना मेरी स्क्रीन पे असल में शो नहीं हो रहा था, वो मैं इरेज करता हूँ। So ये कभी-कभी ऐसा मसला आता है कि वो ना मेरी साइड विजिबल नहीं होता, कुछ आपकी साइड पे था, मैंने स्लाइड चेंज किया, अब now I could see that. It was just remaining from an earlier figure, वो इरेज नहीं हुआ था, मेरे पास शो नहीं हो रहा था वो। Okay, all right. Can you see the screen now? Can you see screen now? I've just refreshed again. How about now? Okay, good. All right. अच्छा, अब हम backwards जाते हैं. So let's say मेरे पास, I said it's actually updating for you a bit later. अब हो जाएगी दोबारा से. Okay, so I've got these two figures. I've got A and B. Okay, I've got these two triangles. I have to describe the transformation. Describe the transformation. Describe the transformation. That maps A to B. Okay. अब देखें, मुझे अभी कहा उन्होंने, was that Usman? Yeah, so Usman was saying, isn't this the same as the reflection in y equals minus x? So how do you figure out which transformation this is? अच्छा, ये तो अभी आपको बताऊंगा चार्ट बना के कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस, but
If you understand it right now, हमारे पास confusion जो आ रही है वो किस में आ रही है? Whether it's a reflection or a rotation. ये reflection होगी या rotation होगी. We discussed 2 tests about this. Corresponding points को join करते हैं, parallel आ रही है कि नहीं आ रही, right? We can do that if you want. या फिर आप order check कर लें. So let me do that. So मैं corresponding points को mark कर देता हूँ पहले. This is P, this is Q, this is R. What about the other figure? दूसरे figure के अंदर I've got P dash here, I've got Q dash here, I've got R dash here. ठीक है? You can join corresponding points. अगर वो parallel आते हैं तो वो reflection होगी, otherwise नहीं होगी. और यहाँ पे हम join करते हैं तो क्या होता है? Yeah, so let's join Q dash. Let's join P dash. Well, they're intersecting. They're not parallel, so it's not reflection. The other way that I told you about was write down the coordinates anti-clockwise. Let's say इसके मैं लिखता हूँ P से start करके. This is PQR anti-clockwise. वही मैं दूसरी figure में करता हूँ P से start करके. What do I get? I get PQR anti-clockwise here as well. दोनों में PQR आ रहा है. Since it's the same, PQR, it's a rotation. अगर सेम आते हैं तो रोटेशन होती है, अगर डिफरेंट आ जाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन होती है. So ये हमारे पास सेम आ रहे हैं, so that's why this is a rotation. So it's a rotation. अब रोटेशन आपने फिगर आउट कर ली, उसके बाद आपने डिफाइन करना. So एक पॉइंट जो मार्क होगा यहाँ पे, that will be on just writing that it's a rotation. अच्छा, अब रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए there are 2 things that you will need. One is the center of rotation and the other is the angle, whether it's clockwise, anti-clockwise. We have to figure that out. अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं rotation with center of rotation something. Center of rotation कुछ होएगा, उसके coordinates लिखने हैं and बल्कि ऊपर लिख देते हैं उसको. रोटेशन यहाँ पे एंगल लिखते हैं, so it's going to be some angle, rotation some degrees, whether anti-clockwise or clockwise. अभी हमें फिगर आउट करनी है, 2 चीजें फिगर आउट करनी है. सेंटर रोटेशन फिगर आउट करना है और एंगल फिगर आउट करना है. Now how do we do that? Now I would recommend Menahil, you might want to refresh the screen. It's visible to everybody else. आप refresh करेंगे so that might help, because it's visible to me, it's visible to everybody else here. So आप अपने end पे refresh कर लेंगे. Okay, now once we know its rotation, हमें ये 2 चीजें चाहिए, rotation का angle और उसका center rotation. Center of rotation आपने कैसे figure out करना है? You will center rotation के लिए मैं यहाँ पे एक line बनाता हूँ. Center of rotation find करने के लिए what you're going to do is draw perpendicular bisectors of corresponding points. अच्छा, इसमें ना काफी लोग इसको देखकर भी कर लेते हैं, अंदाजे से भी कर लेते हैं. So that works for some people. So basically center rotation से ना सारे points का distance same होता है. That's the thing. So if you can just figure that out visually, you know, that works for most people. लेकिन वैसे center rotation find करने का तरीका क्या होता है? You draw perpendicular bisectors. Draw perpendicular bisectors. Draw perpendicular bisectors of corresponding points क्या मतलब? PP dash का perpendicular bisector बनाएंगे. That will be something like this in this case. PP dash का perpendicular bisector. That will be like this. ये P और P dash का perpendicular bisector है. ठीक है? Now I'm assuming you know how to join perpendicular bisectors, right? You know that from loci. ठीक है? इस तरह से QQ dash का perpendicular bisector बनाएंगे.
that's going to look something like this. Q or Q dash का perpendicular bisector, that will be like this. जहां पे ये intersect करेंगे, that will be your center. ये आपका सेंटर होएगा. आप कंफर्म करने के लिए तीसरा भी बना दें, तीनों बना दें, तीनों सेम पॉइंट से पास करने चाहिए. अगर मैं आर डैश का भी यहाँ पे बना दूं, that will be like this. आर और आर डैश का जो होगा perpendicular bisector, that will be like this. तीनों के perpendicular bisectors बना दें, they have to pass through the same point. अगर वो सेम पॉइंट से पास नहीं करे, आपने कोई मसला किया है या फिर वो रोटेशन है ही नहीं. अगर वो सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं तो it's going to be the center of rotation. That center of rotation in this case is the origin. Draw perpendicular bisectors of corresponding points. ये आपने करना है. Their point of intersection will be the center of rotation. Okay, this is the method for finding the center of rotation. It's not necessary to erase that, Laiba, because yeah. So if अगर आपने फिगर में कुछ ड्रॉ की हुई हैं चीजें and it's interfering with that, it's better कि आप उसको थोड़ा सा erase कर दें, ताकि आपकी फॉर एग्जांपल उसने कहा होता है कोई ट्रायंगल्स बनाने के लिए, तो उन बाकी ट्रायंगल से आप कोशिश करें उनसे इंटरफेयर नहीं करें, तो वो वाला पॉइंट इरेज कर दें जो उसको ओवरलैप कर रही हो. But otherwise it's fine. The only thing that matters is that the examiner should understand clearly कि आपने वहां पे क्या किया, and that's enough. Okay, पूरा इरेज करना नेसेसरी नहीं है. Just make sure कि बाकी ट्रायंगल्स जरा आपने कोई बनाई है तो वो बस नजर आ रही हो, and that's it. So that's how you find the center rotation. जब center rotation find कर लिया आपने, यहाँ पे लिख देते हैं center rotation is the origin. That's the origin, 0 and 0. How do you find the angle of rotation? आप कोई भी corresponding points को join कर लें, right? So you have P and this P here, और ये angle measure कर लें. So this is 180 degrees. Let's say this is 180 degrees rotation. This is rotation 180 degrees. 180 degrees के अंदर आपको नहीं लिखना होता clockwise, anti-clockwise. It doesn't matter clockwise हो या anti-clockwise हो. It will result in the same thing. So that does not matter. But this is how you basically evaluate this. अच्छा, अब यहाँ पे 180 degrees वाला तो एक केस हो गया. What if we had to do some other thing? Where is हो रहा है? Let's deal with this. Let's draw another triangle here. I'm going to draw another triangle here, and now we will see कि ये किस तरह से rotate हो रहा है. Okay. Now let me try. So I've got one point here, and एक point मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है. Okay, so let's say I've got this triangle. I've got this triangle. Now, triangle A is mapped onto this triangle C. A जो है वो C पे map हो गई है. What you have to do is you have to describe this transformation. ठीक है, इस transformation को describe करना है. How do you do this? Describe the transformation that maps A to C. ये आपने करना. Now, it's fairly clear that it's a rotation because we don't have to worry about that much. लेकिन again, हमें figure out करना है कि इसका center of rotation क्या होगा और इसका angle क्या होगा. Okay? अच्छा. So देखें, I would recommend you find the center first.
देखिए उस्मान ने कहा है it's 90 degrees anti-clockwise rotation. Well, not quite. It's not that. Angle आप वैसे भी फिगर आउट कर सकते हो. वैसे तो आप कोई भी corresponding sides देख लो. For example, PQ है यहाँ पे. PQ ऐसे था पहले. PQ was like this. बाद में PQ कैसे बन गया? This is P. This is Q. P dash Q dash. This is R dash. बाद में PQ आपका बन गया इस तरह से. P ऊपर है और Q नीचे है. What does that tell you? किस तरह की रोटेशन है? नजर आ रहा है? PQ इस तरह था, वो इस तरह चला गया. कोई corresponding sides देख लें. It's clockwise, right? It's clockwise, but it's easier to identify जब आपने center figure out कर लिया. So it's clockwise rotation. So let me draw that. Let me write that in fact. So it's a rotation. अब हम उसे rotation रहने देते हैं. फिर हम लिखते हैं इसका angle. Main मसला होता है center of rotation find करने का. How do you find the center of rotation? Again, we have to join the corresponding points. Join नहीं करना, उनके perpendicular bisectors draw करने. So we've got P dash here, and जो छोटी वाली side है उसके साथ Q आ रहा है. That's Q dash, and we've got R dash. This is R dash. अच्छा. P और P dash का perpendicular bisector, that's going to be like this. P और P dash का perpendicular bisector. देखिए vertical line है तो perpendicular bisector आपका horizontal होगा like this. This is the perpendicular bisector of P and P dash. ठीक है. अच्छा. What about Q and Q dash? Q and Q dash. Perpendicular bisector of Q and Q dash. Let me see. ये है. Faster आएगा. Okay, so Q or Q dash का perpendicular bisector is going to look like this. Perpendicular bisector of Q and Q dash. It will be like this. Okay. And perpendicular bisector of R and R dash. How does that look like? R or R dash का perpendicular bisector. ये भी आप draw करेंगे. It will be like this. आप कंपास से ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है? I'm just doing this mentally using some things. This is what it's going to be. ये आपका R और R dash का perpendicular bisector आ गया. तीनों perpendicular bisectors ड्रॉ करेंगे. I will recommend that you draw all three. जहाँ पे intersect कर रहे होंगे, that's your center of rotation. Okay? तीन ड्रॉ करने से कंफर्म हो जाएगा आपका. तीनों सेम पॉइंट से पास करने चाहिए. Right? तीनों It doesn't matter. एक perpendicular bisector के लिए साइज सेम होना चाहिए. फिर दूसरा ड्रॉ करने लगे उसमें साइज मैटर नहीं करता. आपस में एक ड्रॉ करने में जब दोनों साइड्स पर लाइन लगाते हैं तब सेम होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, ये perpendicular, ये आपके पास लाइन सेंटर रोटेशन आ गया. This is 4 and 4. सेंटर रोटेशन आ गया आपके पास. जब वो आ गया, अब अपने एंगल देख लेना है. कोई भी corresponding points देख लें. आप देखें फॉर इंस्टेंस Q को देखता हूं मैं. Q ये था. Q रोटेट होके ऊपर चला गया. यहां से आपको पता चल जाएगा ये एंगल क्या बन रहा है. Q नीचे था, उसको रोटेट करके क्लॉकवाइज आप ऊपर ले आए हो. सो दैट्स 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन. ओके, 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन. That's what this is going to be. Is this okay? Any issues with this? Minahil, if it was 270 degrees rotation, you should understand that 270 degrees clockwise अगर उसने क्या हुआ है, that's the same thing as saying 90 degrees anti-clockwise. You know how to do this, right? आप ये कर लें. Because you see, you have let's say something like this, A, B. इसको आप 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, क्या होएगा? ये रोटेट होके पूरा 270 यहाँ पर आ जाएगा और ये ए बी इस तरह हो जाएगा. दिस इज द रोटेटेड फिगर. दिस इज ए बी, ए डैश बी डैश. तो दिस इज द सेम थिंग एज सेइंग 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. सिमिलरली, इफ यू हैड 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, you had 270 degrees anti-clockwise, that's the same thing as saying 90 degrees
clockwise. So you can convert it to something like this. Okay, अगर आपकी clockwise एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आ रहे हो, आप उनको 270 आ रहा हो तो उसको 90 में कन्वर्ट कर सकते हो just by changing the direction. एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कर देंगे, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे. Is that okay, Minahir? All right. Acha. If the image in the object is drawn and they ask angle, it doesn't matter. It does. अच्छा उसने 270 एंगल भी बताया हो. Is that what you're saying? कि angle is 270? तो they will look like the same. 270 and 90 will look exactly the same. बस ये होगा डायरेक्शन चेंज होगी. अगर वो 270 degrees clockwise रखा है उसने, that's the same thing as saying 90 degrees clockwise, 90 degrees anti-clockwise. अगर उसने 270 anti-clockwise रखा हुआ है, वो 90 clockwise होएगा. It's the same thing. Okay, they're asking about angle. If they're asking about angle, you can write any of them. Okay, we'll come to that. Abdullah, we'll come to that. So, all right. It's taking a bit, taking some time to load. Achha, I'm sorry. So there are some lines on the diagram that I don't see on my end. ये बहुत ज़्यादा clutter मुझे नजर आ रहा है. शायद जब मेरे पास मुझे अब नजर आ रही हैं चीजें. तो मैं slide change करता हूँ. So this is a lot of clutter. Unfortunately मुझे नजर नहीं आ रहा होता मेरी side के ऊपर. So let me just get rid of all of this. So that's what you get in rotation. अब rotation में कभी-कभी ये भी होता है कि आपके पास rotation में ये भी होता है क्या कि वो 90 degrees के बजाय कोई और rotation, right? It's not 90, it's something else. कोई और उसने किसी और degrees के ऊपर rotate कर दिया. What do we do in that case? Now, if I can, let me see if I can find a question like that quickly, because there was one somewhere. I sort of remember. खुद से वो draw करना मुश्किल होएगा. Just give me 1 minute. 90 degrees और 180 के अलावा कोई rotation हो, what do we do in that case? आपको खुद से करनी भी हो सकती है और उस तरह से आपको बताई हो. तो उसमें क्या करेंगे? तरीका ये होगा आप center of rotation पहले find कर लोगे. Okay. Now, just give me 1 minute. Just looking for a question for that. Not in this worksheet, maybe in the other. Or maybe one of you can share that in the chat. आपके पास दूसरे एंगल वाला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? I can't find one right now. I know there do exist some questions like that. Okay, so अच्छा मुझे अभी नहीं मिल रहा फौरन से. Yeah, so I know it's fine. So लेकिन मुझे अभी फौरन से मिल नहीं रहा. Abdullah, can you please share a snapshot of a question like that here in the chat? And I'll just paste that here and use that. But for now, let's say हमें ये कहा होता before we go to that. Let's say हमें ये कहा होता we have this center of rotation, rotate. Let's say rotate A 110 degrees anti-clockwise about, let's say, -2 and 3. Let's say we have to do this. -2, 3 pe, -2, 3 is the center of rotation. So that's this point here. ठीक है. इस point के about आपको इसको rotate करना है figure को 110 degrees anti-clockwise. What do you do for this? Again, you mark the corresponding points. This is P, this is Q, this is R. P, आपने करना क्या है? आपने line बना देनी है. Draw a line from C to P.
C से P लाइन बनाएंगे, ठीक है. You will place your protector on this line. इस लाइन के ऊपर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे with the center of the protector on this point C. C के ऊपर सेंटर रखेंगे और इस लाइन के साथ अलाइंड होएगा like this. Okay? You will measure this angle. ये एंगल 110 डिग्री होना चाहिए. We'll draw a line at 110 degrees here. जितने डिस्टेंस के ऊपर P नीचे है उतने ही डिस्टेंस के ऊपर आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना है somewhere here. Now I can't draw that very accurately here, of course, but let's say that point, comes somewhere here. This is maybe your P dash. ये आपने angle measure किया 110 degrees. You will do the same thing for the other points. So R के लिए भी आप क्या करोगे? R के लिए you will draw a line from C to R. अभी lines erase कर सकते हो to reduce clutter after that. But you draw a line from C to R. आपने क्या करना है? यहाँ से 110 degrees measure करना है. इस लाइन से 110 डिग्रीज मेजर करना है यहाँ पे और उतने ही डिस्टेंस के ऊपर आपने पॉइंट मार्क कर देना है. सी से आर का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपने ऊपर वाली साइड के ऊपर जाके मार्क कर देना है. So it may look something like this. Let's say this point is point R. ये आपका पॉइंट R आ गया वहाँ, ठीक है. और इसी तरह से आप Q को रोटेट करोगे 110 डिग्रीज. यहाँ पे ये एंगल 110 होना चाहिए, ठीक है. इस तरह से आप Q के लिए करोगे, C और Q को ज्वाइन कर दोगे एक लाइन से, वहां से 110 डिग्रीज मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है. So your final figure may look something like this. Now, of course, again, as I told you before, it may not be very accurate on my end here. आप क्योंकि प्रोटेक्टर यूज कर रहे होगे, सारे टूल्स यूज कर रहे होगे, it's going to look something like this for you, I suppose. PQ and P and R, that's going to come here. It's going to look something like this. ये आपकी रोटेटेड फिगर होगी. आपने क्या करना है? सेंटर से उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, हर एक पॉइंट से 110 डिग्रीज एंगल मेजर करना है, उसी डिस्टेंस के ऊपर मार्क कर देना. So that's your point Q dash there. P dash, Q dash and R dash. Does this make sense? Does this make sense to everyone? इसी में अगर आपको उल्टा दिया होता कि आपको फिगर्स दी होती और आपको एंगल और सेंटर फाइंड करना होता और वो 90 या 180 के अलावा कुछ होता, तो वो फिर I'm telling you, so if you can share a question like that with me right now, I don't happen to find that at this very point. अगर हम ऐसे वो शेयर कर दें, we will discuss that as well. ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं as an image. I'll just copy that image here. All right, so that's all about rotation. That's all that we need to know about rotation. इसके ऊपर yeah, so we have discussed how to rotate something. We also discussed how to find the center of rotation and the angle of rotation given something. Yes, so in most papers you get 90 and 180. Yes, mostly you get 90 and 180, but the other rotations can also come. You cannot say that they cannot come, so you should be familiar with them as well. You should know how to rotate at other angles, and like we discussed here, and you should also be able to figure out how a figure looks like if it is rotated at another angle. ठीक है, so वो आपको उसका idea भी होना चाहिए. Again, if you can, आप करोगे क्या? So let me just explain that anyway. आप करोगे क्या अगर आपके पास एक फिगर होती और वो इन दोनों एंगल्स के अलावा किसी और एंगल पे रोटेटेड होती? So let me give you one example for that very quickly before we move on. In fact, we have a lot to cover, so I'll be a bit quick with this. Okay, all right. Now, let's say you had another figure here given that looked something like this. Okay, let's say we had this triangle here.
Okay, let's say we had this triangle here, and this is triangle B. Okay, let's call this triangle B. We are going from the triangle A to triangle B. Okay, we're going from triangle A to B. We need to find what is the angle of rotation and the center of rotation. अब देखिए इस तरह की problems के अंदर ना, the first thing that you're going to do is you're going to find the center of rotation. Center of rotation find करने का same method होएगा, right? Center of rotation find करने का same method होएगा. आपने क्या करना है? Perpendicular bisectors draw कर लेने हैं, corresponding points. Now, what are your corresponding points? Again, we say this is the 90 degrees wala angle here, the same angle, this 90 degrees wala point here, the same point here on the other in the other triangle is going to be P dash, and then the smaller length from P, that's Q here. So this is Q dash, and this is R dash, and this is R. Okay. So what are you going to do? You're going to join the corresponding points and draw the perpendicular bisectors for them. P or P dash का perpendicular bisector बनाएंगे. That may look something like this. P or P dash का perpendicular bisector. P or P dash का perpendicular bisector आप बनाओगे तो कैसा बनेगा? It'll be here, and I get one point here. No, this point. And this is 3 and 6, so that's going to be almost here. 3 here, 3 here. So 9. Okay, perpendicular bisector of P may look something, P at P dash may look something like this. I can't figure out the exact right now. It'll look something like this. P or P dash का आपने perpendicular bisector बनाया. Let's say it looked something like this. इसी तरह से आप क्या करोगे? R और R dash का let's say आपने बना लिया perpendicular bisector. It may look something like this. Let's say, ठीक है. इस तरह से आपके पास कुछ करके ना center of rotation आ जाएगा. Okay. Now, I just drew that randomly, so I'm not going to get very accurate numbers here. But let's say मैंने दो perpendicular bisectors बना लिए, and this is, let's assume this is my center of rotation. Okay, जो आपका center of rotation आएगा ना, जो भी आपका center of rotation आ गया, आपने simply क्या करना है? आपने join कर देना है उसको in points के साथ, corresponding points के साथ. So let's say मैं यहाँ पे join कर देता हूँ P और P dash को. अगर मैं P और P dash को join करता हूँ, P और P dash को join किया, ये angle आप measure कर ले, ठीक है? ये आप angle measure कर लो. Yes, Usman, the center is usually in integers or in 0.5. इसके अलावा नहीं होता. But again, this is not an actual question. I just made this randomly. So let's say आपको यहाँ पे center rotation. I am just giving you the concept कि आपने क्या करना है? Center से join कर देना है corresponding points को, ठीक है? और आपने फिर ये angle यहाँ से measure कर लेना. Center आपका आएगा उसी तरह से perpendicular bisectors के intersection से, और फिर angle आप कोई भी corresponding points को join करोगे center के साथ और आप ये angle measure कर लोगे, ठीक है? So if one of you can find a question quickly, you can share that with me. We can discuss that towards the end of the class. But let's move on for now. So we've discussed rotation, and most of the things that you need to know about rotation, we've discussed them. Now let's move on to the last thing, that's enlargement. The last type of transformation, that's enlargement. And let's see what we do for that. Achha, so this is the last type of transformation. Now that is enlargement. Laiba, we will have another class tomorrow, inshallah, and that will be the last class. Okay, so kal hamari ek aur class hogi, that will be on statistics and probability. We will end with that. Okay. All right, and those of you who are interested in the past papers that we've done, you can actually find them here. This is my YouTube channel. You can find all the yearly past papers that we've done in the paid group. They're available as recordings there on YouTube here.
also access them if you want. I'll be trying कि मैं ये सारे topical lectures भी upload कर दूँ वहाँ पे, but I don't promise that right now. It's going to take time, but yearly past papers you will find there on the channel. You will have a playlist by O-level past papers, something like that. You'll find them there. Okay. Now, yeah, let's talk about enlargement. Of course, when you go to that channel, you should make sure that you subscribe to that channel as well, so that you get any notifications later on. So I'm currently most of the content there is for A-level, but I'm adding more for O-level as well. So hopefully there should be more there. Okay, so let's talk about enlargement. Enlargement में क्या होता है? Enlargement में we have two things. Okay, there are two things in enlargement. One is the center of enlargement. Center of enlargement, that is important. And the second thing is the scale factor. इसके अंदर ये दो चीजें होती हैं. अच्छा, this is the only figure, this is the only transformation in which the size changes. Size of the figure changes in this transformation. आपका size change हो जाता है. Okay. Now, let's talk about what this means. So let's say we want to enlarge A with, or let's say about origin, with scale factor 3. अच्छा, अब स्केल फैक्टर जो आपके पास नंबर है ना, यहाँ पे जो नंबर है 3, 3 का मतलब है कि आपकी फिगर, आपके जो फिगर की सारी लेंथ्स है ना, वो 3 टाइम्स हो जाएंगी, राइट? सो फॉर एग्जांपल दिस लेंथ हियर, दिस इज 1 यूनिट, की क्यू लेंथ है, दिस इज 1 यूनिट, ये लेंथ आपकी 3 यूनिट्स हो जाएगी. पी आर इज 2 यूनिट्स, ये आपकी 6 यूनिट्स हो जाएगी. 3 टाइम्स आपकी सारी लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अच्छा मिनाहिल, ओरिएंटेशन जो है ना एनलार्जमेंट के अंदर, इफ द स्केल फैक्टर इज पॉजिटिव, if the scale factor is positive, the orientation remains the same. अगर स्केल फैक्टर आपका नेगेटिव हो जाए तो आपकी फिगर उल्टी हो जाती है, ठीक है? अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव हो जाए, we will talk about that in a moment, but let's do this for now. अगर पॉजिटिव हो तब आपका ओरिएंटेशन वही रहती है, ठीक है? So orientation remains the same, direction of the figure it remains the same. अच्छा, enlarge आपने करना है A को about the original scale factor 3. Now what does that mean? Center of enlargement is the origin. So that's your center of enlargement. This origin here 0 0. आपने क्या करना है? अपनी फिगर को enlarge करना है about this. Okay? अच्छा, अब इसका एक तरीका क्या है? आप फिगर से कर सकते हो using the ruler, using a ruler, right? So for instance, आप 0 से origin से आप P पे जा रहे हो, आप रूलर से देखोगे origin से इसका डिस्टेंस कितना है, इसको 3 टाइम्स कर दोगे. This distance इसको 3 टाइम्स करेंगे, ये पहुंच जाएगा इधर पॉइंट, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. रूलर से आप origin से इसका डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दोगे. Okay? That point is there. अच्छा, origin से अगर आप R पे जाओ, origin से अगर आप R पे जाओ, उस पे क्या होगा? आपका जितने डिस्टेंस था यहाँ पे, इसको 3 टाइम्स कर दो. Again, using a ruler, you can do this. This is twice and this is thrice. You'll reach this point here. This is R dash. Origin से Q, जितना भी ये distance है, इसको 3 times कर दो. 1, 2, 3. That's going to be right here. This is your Q dash. And that is your enlarged figure. Okay? Center of enlargement से जो आपका distance है, वो भी 3 times हो जाएगा हर point का. और इनकी लेंथ्स भी सारी आपको नजर आ रही होंगी, अब ये सारी 3 टाइम्स होती हैं एज कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल फिगर. जो भी ओरिजिनल फिगर में लेंथ थी, आपकी वो लेंथ वहां पे 3 टाइम्स हो गई. नाउ समटाइम्स you might find it a bit more difficult doing this using a ruler. Another way to do this is using vectors. आप क्या कर सकते हो? आप देखो, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखें स्केल फैक्टर आपका क्या है.
स्केल फैक्टर आपका क्या है 3 आपका स्केल फैक्टर है। आप क्या करो, आप अपने तीनों पॉइंट्स को लिख दो जो आपके तीनों पॉइंट्स ओरिजिनल फिगर के अंदर है, P है, Q है और R है। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स का मतलब यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे तो ठीक है ओरिजिन था, आपने देखना है ओरिजिन से P पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, ओरिजिन से P पे जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, you have to go 1 unit right and then 1 unit up, तो P पहुंचने के लिए आप go 1 1। अच्छा, ओरिजिन से Q पे जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 2 units right 1 unit up, that's 2 1। ओरिजिन से R पे जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 1 unit right and then 3 units up, that's 1 3। जो आपका इमेज आएगा that will just be 3 times this whole thing। जो भी आपका स्केल फैक्टर था आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके साथ, तो आपके P dash Q dash R dash होंगे, they will look like this, 3 into all of that, so that's 3 3, that's 6 2, sorry 6 3, and then 1 3 and 9। अब देख ले वही आ रहे हैं, P dash के कोऑर्डिनेट क्या है 3 3, Q dash के क्या है 6 3, R dash के क्या है 3 9, right? You can also do it like this। आप ग्राफिकली कर सकते हो रूलर यूज करके, और आप इस तरह से वेक्टर यूज करके भी कर सकते हो। Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? No? अच्छा लेट आप देखें, ओरिजिन से P पे जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, 1 unit right 1 unit up, you write P के coordinates like this 1 1। ओरिजिन से Q पे जाने के लिए 2 right 1 up, that's what we're doing here 2 1। R के लिए क्या कर रहे हैं, 1 right 3 up, you write 1 3 here। जो भी आपका स्केल फैक्टर होगा उसको आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 into this, ये आपके पास फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ गए आपकी इमेज के। सो 3 3 ओरिजिन से, यस मनाहिल, यू गो 3 राइट एंड 3 अप, यू गेट P dash there। Q dash के लिए you go 6 right and 3 up, you get Q dash। R dash के लिए you get 3 right and then 9 up, you get that point there, that's R dash। Does that make sense, Shamir? Okay, now let's change this a bit। इसको सबको erase कर देता हूँ and let's change this a bit। इसको मैं यहाँ पे इसकी जगह, now what if I have something else now? I want to enlarge this figure, so I want to enlarge A by scale factor -2 about, or let's say scale factor -2 with 0.3 as the center of enlargement, with 0.3 as the center of enlargement। ठीक है, अच्छा, how do we do this? Scale factor -2 and 0.3 is the center of enlargement। Let's mark the center of enlargement there, 0.3, that's this point here, this is the center of enlargement। हमने क्या करना है, उसी तरह से ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ग्राफिकली क्या होएगा, this is P, this is Q, this is R। हर पॉइंट को आप देखो कि कितना डिस्टेंस है सेंटर से, दिस इज द सेंटर। R का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। अब जब ये स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा ना, आप सेंटर के दूसरी साइड पे चले जाओगे। जब नेगेटिव स्केल फैक्टर होएगा, अगर तो +2 होता तो आप सिर्फ क्या करते, ये 1 यूनिट यहाँ पे है, अब इसको डबल कर देते, 2 यूनिट्स हो जाता, या R यहाँ पे आ जाता, R डैश इधर आ जाता। बट सिंस इट्स नेगेटिव, आप सेंटर के दूसरी साइड पे चले जाओगे और डिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा। So it's 1 unit right now, it becomes 2 units on the left side, so R will come here, this will be your R dash। ठीक है, अच्छा, what about P? जितना नीचे यहाँ पे था
उससे डबल दूसरी साइड पे चला जाएगा. So once and then twice, that is going to be right here. P dash is going to be here. अब रूलर से कर सकते हैं इसको. ठीक है, डिस्टेंसेस ट्वाइस कर दिए और ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर. इसी तरह Q इधर है, so उससे ट्वाइस उधर साइड पे, you will basically reach this point here, that's Q dash, and this will be your enlarged figure. ठीक है, अगर आप उसको मैट्रिक्स से करते हैं उस तरह से, let me explain how that will be done. स्केल फैक्टर क्या है? -2. अच्छा, ये वो वाले प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस नहीं है, ये इसी को करने का वेक्टर मेथड है बेसिकली. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज समथिंग एल्स, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इसके तो आपको मैट्रिक्स याद भी नहीं होना जरूरी. जो आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जब 0, 3 हो जाए, उसका तो मैट्रिक्स आपको पता है, याद भी नहीं होगा. ये दिस इज जस्ट अ वेक्टर मेथड ऑफ डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन theoretically. How will we do this? Scale factor क्या है? -2. Let's write -2 here. फिर तीनों पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे. We've got P point, we've got Q point, we've got R point. अच्छा, अब इनके कोऑर्डिनेट्स आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, आपने इनका देखना है कि सेंटर से P पे आप कैसे पहुंच सकते हैं. सेंटर से स्टार्ट करके how can you reach the point P? Let's think about this. सेंटर से P पे कैसे पहुंचेंगे? 1 right and then 2 down. 1 right, 2 down. So 1 again horizontal component and the vertical component is -2. So P से उस पे जाने के लिए क्या होएगा? सेंटर से P पे कैसे जाएंगे? 1 right and then 2 down. ठीक है? Q पे कैसे जाएंगे? 2 right and 2 down. That's +2 on the horizontal, 2 right and 2 down. मतलब है -2 on the vertical axis. 2 and -2. R के क्या हो जाएंगे? 1 right. Okay, so that's 1 right plus 1. Vertically कोई मूवमेंट नहीं है, so that's 0. Okay, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे -2 के साथ, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. You will get the final result from that. That will be P dash, Q dash, R dash. या आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. -2 को मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, you get -2, 4, -4 and 4 and then -2 and 0. ये आपके कोऑर्डिनेट्स नहीं है. आप सेंटर से स्टार्ट करोगे, आप देखोगे P कैसे मिलेगा आपको. सेंटर से 2 यूनिट्स लेफ्ट, सेंटर से स्टार्ट करके 2 यूनिट्स लेफ्ट, राइट, एंड देन 4 यूनिट्स अप, यू गेट दिस पॉइंट P देयर. Q कैसे मिलेगा? सेंटर से 4 यूनिट्स लेफ्ट एंड देन 4 यूनिट्स अप, दैट्स योर पॉइंट Q देयर. R dash कैसे मिलेगा? सेंटर से 2 यूनिट्स लेफ्ट, that's your point R dash. So that's how you do this transformation, right? Yes. So you can either do this using a ruler. आप ruler से बस उस opposite side पे वो देख लें distance कितना है, or you can use this this vector method like this. Okay. Isha, it's not coordinates. We're not talking about coordinates. Think of it this way. हम सेंटर से उस पॉइंट पे कैसे पहुंच सकते हैं? इस सेंटर से हम P पे कैसे पहुंचेंगे? 1 right and 2 down. तो जो आपका सेंटर होगा ना, with respect to that आपने देखना है. Doing 1 right and then 2 down from the center. So that's why it's important कि आपको पता हो सेंटर कहाँ पे. सेंटर से आपको मूव करके वहां पे पहुंचोगे आप. Does this make sense? Yes. So that's about enlargement. Now, how do we go the other way around? अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब आपका ये enlargement वाला नंबर जो है ना, ये बड़ा होएगा 1 से, greater than 1, तो आपकी फिगर जो है वो enlarge होएगी, आपकी फिगर बड़ी होगी. अगर ये less than 1 है, कभी आपके पास आ जाता है half scale factor, 1/3 scale factor, तो आपकी फिगर will actually become smaller. So you can say it will shrink. Your figure will become smaller. जो आपका स्केल फैक्टर जो है ग्रेटर देन 1 होता है, मोस्टली यही होता है, ग्रेटर देन 1. कभी कभी वो लेस देन 1 आ जाता है. फॉर एग्जांपल 1/2 स्केल फैक्टर, 1/3 स्केल फैक्टर, इसका मतलब ये आपकी फिगर छोटी हो जाएगी. ठीक है. और अगर प्लस हो आपका स्केल फैक्टर पॉजिटिव, आपकी फिगर सेंटर के उसी साइड पर आएगी.
दोनों फिगर्स एक साइड पर होंगी। अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव है, लाइक इन दिस केस, ओरिजिनल फिगर है उसके ऑपोजिट साइड पे आपकी एनलार्ज फिगर होगी। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव स्केल फैक्टर होगा, आपकी फिगर इन्वर्ट भी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये जो ओरिजिनल फिगर थी इसको आपने इन्वर्ट कर दिया है टू गेट दैट फिगर। ओके, वरीशा नहीं, नेगेटिव में फिगर छोटी होना जरूरी नहीं है, नेगेटिव में फिगर दूसरी साइड पे चले जाती है, दैट्स ऑल वी अंडरस्टैंड फ्रॉम नेगेटिव, सेंटर के दूसरी साइड पे चले जाती है। ठीक है, छोटी बड़ी का आपके नंबर से पता चलेगा whether it's greater than 1 or less than 1। अच्छा, इस यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, नंबर आपका अच्छा, मे बी दैट्स व्हाट इज कंफ्यूजिंग। लेस देन 1 है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नंबर्स। मैग्नीट्यूड आपका अगर 1 से बड़ा है तो एनलार्ज होएगा, मैग्नीट्यूड आपका 1 से छोटा है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1/2 है, -1/2 है, इनसे आपकी फिगर्स श्रिंक होएंगी। अगर आपका नंबर बड़ा है 1 से, नंबर की बात हो रही है सिर्फ, -2 है, लेट्स से -3 है, डिजिट जो आपका है वो छोटा है बड़ा है, 2 है, 4 है, ऑल ऑफ दीज आर एनलार्जमेंट, इससे बड़ी होगी फिगर। ठीक है, negative figure, so that's I've answered that. Image equal to box. We're not dealing with centimeters here, Shami. We're just counting the number of units from the graph जो हमारे पास एक्सेस दिया हुआ है, उसी पे जो number of units है वो काउंट करें। यहाँ पे स्केल जो है वो मैटर नहीं करता इतना, सेंटीमीटर्स नहीं काउंट कर रहे हैं हम यूनिट्स काउंट कर रहे हैं। The points that I've plotted now. So how am I plotting these points? So basically ये जो मेरे पास राइट साइड पे ये आए हैं नंबर्स, ये मैं कहां से देख रहा हूँ, सेंटर से स्टार्ट करके, राइट। सो पी डैश कैसे होएगा, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स -2 4 नहीं है, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या कुछ और होंगे। आपने बस देखना है सेंटर से आपको 2 यूनिट्स लेफ्ट जाना है और 4 यूनिट्स ऊपर जाना है। सेंटर से स्टार्ट करके 2 यूनिट्स लेफ्ट एंड देन 4 यूनिट्स अप, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। कोऑर्डिनेट्स आपके आपके आते हैं ओरिजिन से। अगर आपका सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपका ओरिजिन है, तो फिर तो इट डजंट मैटर। बट इफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज समथिंग अदर देन द ओरिजिन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट सेंटर। सेंटर से स्टार्ट करेंगे और वहां से देखेंगे अच्छा कितने यूनिट्स लेफ्ट राइट जाना है, कितने यूनिट्स अप डाउन जाना है। ओके, yes, these are positions from the center. These are not coordinates, these are the positions of those points, relative positions of those points from the center of enlargement. These are not coordinates, these are not coordinates from the origin. All right, acha, let's move on. Let's look at what happens if we are doing the other way around. If we are given some figures और हमें figure out करना है कि वो क्या है, basically whether what is the center of enlargement and what is the scale factor, we have to figure that out. Okay, now what I'm going to do for that is I'll in fact take some example from somewhere that might be quicker. Okay, I think I'll just make one here. So let's say we have something like this. Put one point here, and put one point here. Put one point here. Okay, so let's say we got this diagram here. So you've got this diagram here. It looks something like this. Okay,
and this is called triangle B. So A goes to B. Describe the transformation. Describe the transformation. अच्छा, एक तो आपको नजर आ रहा है फिगर का साइज चेंज हो रहा है. It cannot be anything other than enlargement. ये तो आपको पता चल गया enlargement. ठीक है, so that's fairly straightforward. It has to be an enlargement. अब enlargement के अंदर आपको दो चीजें बतानी होती हैं. One is the scale factor, and the other is the center of enlargement. Usman, yes, the magnitude of the scale factor is 2, but we also have to be careful. Is that going to be positive or is that going to be negative? So that's also an important point. So it's an enlargement. Let's write that here. It's an enlargement. Now we have to write two things here. One is the scale factor, and the other is the center of enlargement. Okay, how do you find the center of enlargement? Let's write that down here. Center of enlargement कैसे find करेंगे? It's fairly straightforward. Just one step, in fact. Join the corresponding points. कोई construction और करने की जरूरत नहीं है. Just join the corresponding points. Just join the corresponding points. And point of intersection is the center of enlargement. Point of intersection will be the center of enlargement. ठीक है? अच्छा, अब इसमें भी I would recommend that you find the center of enlargement first. It will save you from some errors like the sign error कि ये scale factor positive होना चाहिए negative होना चाहिए. ठीक है? अच्छा, scale factor आपको number तो पता चल जाएगा already. आपको पता है आप अगर corresponding points यहाँ पे mark कर लो, this is P, this is Q, this is R. Corresponding points क्या होंगे? 90 degrees वाला P dash, and 90 degrees के साथ जो छोटी वाली side है that's Q dash, और जो दूसरी side यहाँ पे बन रही है that's R dash. PQ पहले 1 unit था, बाद में क्या हो गया 2 units. We know that the figure is twice as big in terms of the length as before. So scale factor is going to have a 2 there. But is that going to be positive or negative? Well, that we're not sure about right now. One way to think about this is, has the figure inverted or is it the same orientation? Figure की orientation same है पहले की तरह, change हो गया. It's not the same, right? Same नहीं है, it's opposite. पहले 90 degrees नीचे आ रहा था, अब 90 degrees ऊपर आ रहा है, उल्टी हो गया figure उल्टी हो गया. So it's going to be negative there. The other possibility is this, if this is harder, you find the center of enlargement first. पहले center of enlargement पहले find कर ले. अगर center of enlargement के same side पे दोनों figures हैं, then it's positive. अगर opposite sides पे आ रही हैं, then it's negative. Let's find that. Corresponding points को join करते हैं. Let's just join the corresponding points. Let's do that. So P and P dash. Join those points. Q and Q dash. R and R dash. All of them meet at the same point here. That's your center of enlargement. So the center of enlargement, therefore, is going to be 3 and 3. So center of enlargement is 3, 3. We figured that out. अब center of enlargement के opposite sides पे दोनों figures हैं. जब opposite sides पे होती हैं, negative scale factor होता है. So we have -2 as the scale factor there. So enlargement को आप इस तरह से define करते हो, scale factor बताते हो, center of enlargement बताते हो. Scale factor के लिए you can look at corresponding lengths. For example, this length was 2, वहाँ पे वो 4 हो गई है, तो double हो रही है. ये 2 आ गया यहाँ पे. But since the figure is inverted, या फिर क्योंकि center के opposite sides पे figures हैं, we have a negative sign there. Okay, and then you also write the center of enlargement. That's how you describe an enlargement. Okay, now what do we do to identify transformations? Transformations, आपके पास दो figures दी हुई हैं, आपने identify करना है कि ये कौन सी transformation है. How do you do that? You so this is a chart that I've made
for you that you can use. आपने किस तरह से सोचना है? What's going to be your thinking process? What's going to be your thinking process for this? सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से क्या पूछना है? Is it the same size? Is it the same size? अगर सेम साइज नहीं है, अगर आपकी फिगर का साइज चेंज हो गया, so this is for identifying which transformation you have to use, which transformation is there, जो भी आपको फिगर दो शो हुई है, आपको कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. How do you do that? The first question you ask yourself is it the same size or not? If it's not the same size, then you have only one option, that's enlargement. आप enlargement आप दो चीजें लिख दोगे, आप कि स्केल फैक्टर लिखना है, वो आप फिगर आउट करोगे और आप सेंटर फाइंड करोगे इसका, वो आप लिख दोगे, you will describe that transformation. Okay. If the size is same, you've got three options. बाकी तीनों में से कुछ भी हो सकता है. Then the next question आप क्या पूछोगे? Is the orientation the same? यानी कि वो same orientation है, पहले आपके ये थी और बाद में भी इसी तरह की फिगर है, डायरेक्शन उसकी वही है पहले की तरह की. If that is the case, then it's a translation because it's just a shift of the figure. उठा के बस दूसरी जगह पे रख दिया. That's fairly straightforward as well. Simple translation. If the orientation is also different, if the orientation is not the same, then it's either reflection or rotation. ये दो options रहेंगी आपके पास. उसको टेस्ट करने के लिए एक हमने वो देखा रूल जो हमने देखा था कि अगर आपके पास let's say एक फिगर इस तरह से है A B C एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसी फिगर को मैं इस तरह यहाँ पे साइड बनाता हूँ, and this is A, you have a C there, that's going to be a B in fact, that's B, this is C, this is A. अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज देखें या क्लॉकवाइज देखें तो क्या इनका ऑर्डर सेम है? अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, फॉर एग्जांपल ABC बनता है, सेम लेटर से स्टार्ट करना है, ABC एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ABC है. If the order remains the same, it's a rotation. If the order changes, it happens in case of a reflection, क्योंकि आपकी उसकी फिगर रिवर्स हो जाती है. अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखता हूँ, I had something like this, I had this figure, इसके मेरे पास पॉइंट्स क्या आ रहे होंगे? I will have B, A and C. इसमें एंटी क्लॉकवाइज आता हूं मैं पहली वाली फिगर में, A से स्टार्ट करके I get ABC. इसमें A से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज आता हूं, what do I get? I get ACB. Since order change हो गया, it's a reflection. So that's how you find reflection. और तीनों केसेस के अंदर आपने फिर देखते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए. ट्रांसलेशन के लिए you use translation vector. आप ट्रांसलेशन वेक्टर लिख दोगे. रोटेशन के लिए you write the center of rotation and the angle with the direction, the clockwise, anti-clockwise है. Reflection में you write the line of reflection, right? So that's what you do. इसमें जो last ये वाला टेस्ट मैंने लिखा है, इसमें आप parallel lines वाला टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? So parallel lines corresponding points को join करें, अगर parallel आ जाती हैं lines तो that's a reflection.